We are observing you crossing the 260 of Lima at 31 miles west. Level is 10,700. October 1996. A state-of-the-art modern aircraft cranes out of control for 30 horrific minutes और उसके बाद वो पैसिफिक ओशन में क्रैश कर जाता है। I've got it! I've got it! Climb Aeroperu 603. Listen to turn over! ऐसा क्या हुआ था जिसने कि एरोपेरो की फ्लाइट 603 को क्षतिग्रस्त किया? इस रहस्य का हल मिल सकता है फ्लाइट के ब्लैक बॉक्सेस फ्लाइट रिकॉर्डर में, जिनको कि इन्वेस्टिगेटर्स को जानना जरूरी है। 2 cents of American money brought down a $75 million aircraft and killed 70 people. This kind of a problem that they faced that night was probably one of 10 over the last 20 or 30 years. You never lose hope immediately. You know, it takes time for you to get to that point that you will accept the fact that there's no people that got out of their life. We're gonna turn over! और जो उन्हें पता लगा, निष्कर्ष निकला, वो ये था कि a simple human error caused a chain of events which ultimately led to this tragedy. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरे, लेकर के आया हूँ आपका फेवरेट शो दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स, आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं धरती पे घटित अलग अलग दुर्घटनाओं की। और आज की कहानी है हमारी 2 अक्टूबर 1996 को घटित एक कहानी, जबकि एरोपेरू की फ्लाइट 603 पैसिफिक ओशन में क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके साथ हुई थी मौत 70 लोगों की। 2 cents of American money brought down a $75 million aircraft and killed 70 people. This kind of a problem that they faced that night was probably one of 10 over the last 20 or 30 years. You never lose hope immediately. You know, it takes time for you to get to that point that you will accept the fact that there's no people that got out of their life. We're gonna turn over! लीमा, पेरू, होएशेबेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एरोपेरू की फ्लाइट PL 603 prepared for takeoff for सैंटियागो, चिली। जो प्लेन था उस दिन वो था 4 साल पुराना बोइंग 757-23A, a state-of-the-art passenger jet known for its reliability and safety. उस दिन जो 2 पायलट थे प्लेन में, वो एरोपेरू के बेस्ट
पायलट थे, कैप्टन एरिक शिवास 58 और फर्स्ट ऑफिसर डेविड फर्नांडिस जिनकी की उम्र 42 साल थी। विमान पे सवार थे 61 यात्री, 61 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर, जिसमें से कि ज्यादातर लोग चिली से थे जो कि वापस अपने घर जा रहे थे, और बाकी जो थे पेरुवियन थे, ब्रिटिश थे, इटालियन थे, स्पेनिश थे, एक इंसान न्यूजीलैंड का भी था दोस्तों, और बाकी अलग अलग लैटिन अमेरिकन देशों के यात्री मिले जुले थे उस प्लेन पर सवार। और उनमें से एक थे ब्रदर इन लॉ एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ Mexican businessman Monas Albert. Our companies do business in South America. We export, and every so often we will go to see our clients. And on this trip, Kenny and Abraham went to see some clients in Peru and in Chile. I had a very good relationship with both of them. With my brother-in-law, of course, we were like brothers. I love the guy. He married my only sister. So we had a great relationship. फर्स्ट ऑफिसर फर्नांडिस ने टावर को कांटेक्ट किया और टेक ऑफ की परमिशन मांगी उनसे। Lima Tower, Aeroperu 603, runway 15, ready for takeoff. Aeroperu 603, use noise abatement. Wind calm, ready for takeoff on runway 15. 1515, transponder. Flaps 15, takeoff briefing complete. और कैप्टन ने एक जोक भी कहा था इस बात पे जब उन्होंने फर्नांडिस ने टावर से कांटेक्ट किया था तो। See how accurate we are? Not even Swiss. Rolling. जो एरोपेरू का 757 बोइंग प्लेन था, that was among the latest computer controlled aircraft, जिसमें कि pilots are trained कि they can rely on the central data system, जिससे कि गलतियां कम से कम हो। गलतियां भी कौन सी? दोनों प्रकार की गलती, मैकेनिकल और ह्यूमन एरर, दोनों जो है they can be reduced to the bare minimum. 80 knots. Check. V1, rotate. V2. Gear up. टेक ऑफ के दौरान बोइंग 757 ने बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्म किया, लेकिन हवा में उड़ने के मिनटों बाद उनको एक पायलट्स को बहुत ही अनयूजुअल रीडिंग दिखाई दी। The altimeters have stuck. Yeah. All of them. This is really new. Keep V2 plus 10. ऑल्टीमीटर जो होता है प्लेन के अंदर, वो बताता है कि प्लेन जमीन से कितना ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन उस दिन, उस रात एरोपेरू की फ्लाइट PL 603 का ऑल्टीमीटर बता रहा था रीडिंग 0। बोइंग 757 में 3 ऑल्टीमीटर होते हैं, एक पायलट के लिए, एक को पायलट के लिए और तीसरा बैकअप के लिए, लेकिन उनके तीनों ही अल्टीमीटर 0 रीडिंग दिखा रहे थे। और उसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया, और वो था एयर स्पीड इंडिकेटर। The speed. Okay. The speed. What's going on? We're not climbing. No, I am climbing, but the speed. Hold it. Maintain speed. एयरपेरू की फ्लाइट PL 603 अब लीमा को पीछे छोड़कर पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ चली। 3, we are descending. Rudder ratio. That's strange. Turn to the right. और
अल्टीमीटर और एयर स्पीड इंडिकेटर के ना काम करने से the pilots now were flying totally blind. They got a rudder ratio warning, which consists of an amber light that would come flashing on there with a little beeping horn and a message on this engine crew alerting system saying rudder ratio. That's just a system that reduces the amount of rudder the airplane has that can be used as the airplane accelerates and goes faster and faster. Because it was sensing wrong or improper information, it sensed a fault, so it gave a warning to the crew. लीमा में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे वो कांटेक्ट में थे प्लेन के और वो उनकी हाइट और कोर्स को नोट डाउन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तब नहीं सुना जब पायलट्स को एक और माइनर इंडिकेशन मिला कि उनको अपना रडर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। रडर दोस्तों वो होता है जो प्लेन को स्टीयर करता है लेफ्ट और राइट जाने के लिए। एलन मैक्लाउड जो हैं बहुत ही एक तजुर्बेकार एयर कनाडा के पायलट हैं और वो कहते हैं कि जो प्लेन का सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम था वो ये सब अजीबोगरीब वार्निंग्स को बता रहा था, लेकिन पायलट्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों वार्निंग दे रहा है। उसके बाद उस एल्टीमीटर ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और सब कुछ थोड़ी देर के लिए लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। Climb, 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 climb! I am. Climb, you're going down, David. I am up, but the speed. Yeah, but it's stuck. Mach trim rudder ratio. Climb, 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 climb! Set heading 100. Now you're... It's okay on this heading. Set the climb thrust. Center autopilot in command. टेक ऑफ के सिर्फ 1 मिनट बाद कैप्टन श्राइवर ट्राइड टू एंगेज द ऑटो पायलट। There's no command. ऑटो पायलट को एंगेज करने के लिए इट रिक्वायर्स 2 आइडेंटिकल डेटास फ्रॉम 2 आउट ऑफ द 3 जो प्लेन के जो कंप्यूटर फ्लाइट रिकॉर्डर्स हैं, 3 जो है प्लेन में, 3 में से 2 में से अगर आइडेंटिकल डेटा मिलता है उसे तो तब ऑटो पायलट एंगेज हो जाता है। लेकिन दोनों पायलट की रीडिंग में इतना फर्क था कि ऑटो पायलट इट डिसएंगेज्ड इटसेल्फ। उसके बाद दोस्तों उनको एक और वार्निंग मिली। Mach trim, Mach trim. वो थी मार्क ट्रिम से। मार्क ट्रिम जो बताता है कि प्लेन जो है एक लेवल पोजीशन पे उड़ रहा है कि नहीं, लेकिन उन दोनों पायलट को ऐसे लग रहा था कि बोइंग 757 तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उड़ रहा है, लेकिन उनको वार्निंग इंडिकेशन आ रही थी मार्क ट्रिम से जो कि बताता है कि प्लेन सही लेवल पोजीशन पे उड़ रहा है कि नहीं। Let's go to basic instruments. Everything's going to hell. Mach speed trim is a system that trims the airplane. It changes the angle of the horizontal stabilizer in the back end of the airplane, and that has to be changed as the airplane accelerates to a higher speed. It was getting false indications, so they got a warning that they had an overspeed, which of course they didn't. That warning would consist of, again, the master caution and a master warning, which is a red light associated with an oral warning as well. इतने कंफ्यूजिंग वार्निंग्स और ऑटो पायलट के ना एंगेज होने के बावजूद भी कैप्टन श्राइवर जो थे प्लेन को नॉर्मली हवा में कई घंटों तक रख सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो लैंड करेंगे और उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर डेविड फर्नांडिस को ये हिदायत दी कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करें। An emergency. Aeroperu 603 Lima. We are declaring an emergency. We have no basic instruments, no altimeter, no airspeed indicator. Declaring emergency. Receive. Altitude? We don't have. We're up to 1,000 feet.
Approximately 1700. 603. Confirm if possible if you can change your frequency to 119.7 to make sure you can receive radar instructions. लीमा से सिर्फ 40 मील दूर, the pilots made their first attempt to make an emergency landing. और उन्हें अब संदेह हो रहा था कि जिस तरह से प्लेन बिहेव कर रहा था और उनके इंस्ट्रूमेंट पैनल्स एक एक करके काम करना बंद कर रहे थे, तो उन्हें शक हुआ कि शायद एयरपेरू के जो ग्राउंड क्रू है उन्होंने एयरक्राफ्ट के साथ कुछ छेड़खानी करी है. They might have tampered with the aircraft. We changed to 119.7. Auto throttle. Disconnected by itself. And maintenance move everything. What have they done? I'll take the controls now. Okay, you have control. अब तो दोस्तों ऑटो थ्रॉटल ने भी डिसएंगेज कर दिया अपने आप को इस वक्त. Affirmative. Maintain present altitude. What level do we have? We have 4,000 feet. Can you confirm for us? Correct. Maintain 4,000. पायलट का जो शक था कि शायद मेंटेनेंस क्रू ने टैंपर किया है एयरक्राफ्ट के साथ, वो इट वाज क्लोज टू द रियलिटी, लेकिन इस वक्त उसके आगे सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं था. Lima, 603. Aeroperu 603, Lima. We request vectors for ILS. Runway 15. इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए उन्होंने ILS की मदद ली, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो कि उनके कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जो एल्टीट्यूड की इंफॉर्मेशन है वो आती है एयरक्राफ्ट के ट्रांसपॉन्डर से. Auto throttle disconnect. Really, we don't have any control. We don't have any control, not even the basics. Let's see. Check everything. The airplane was controllable, but you first have to diagnose what's wrong. And it's very easy from 20/20 hindsight, sitting here in a chair on a nice sunny day, to say, this is what he should have done. But in the cold, dark night, with bells and whistles going off, it's very difficult to analyze conflicting information that you're getting. This kind of a problem that they faced that night was probably one of 10 over the last 20 or 30 years that has been similar to this. क्योंकि रात का समय था और वो पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहे थे, तो देख के पायलट ना ही एल्टीट्यूड ना ही स्पीड का पता लगा पा रहे थे उस रात, तो उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद मांगी कि वो उनको गाइड इन करे टुवर्ड्स देन emergency landing at the Lima airport. Responding. Airspeed is 0. All speeds. Right. Can you give us the airspeed, please, if you have us on the radar? Yes, affirmative. As of 10 seconds. It seems that you're climbing at level 6,000 at 22 miles south on heading 195. एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंप्यूटर ने प्लेन की हाइट और स्पीड कैलकुलेट करके उनको बताई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने. Okay, we have that. We are on heading 190 and we have 7,000 feet on the altimeter. Yes, correct. You're now reaching 7,000. लेकिन दोनों को ही ये नहीं पता था कि वो जो रीडिंग्स आ रही हैं, वो कैलकुलेशन जो करी गई हैं, वो गलत है. The traffic controller would try to help the pilot, but he was receiving the wrong information on altitude. He was receiving a wrong indication from the captain's altimeter. The reason the air traffic control system was transmitting improper altitude readout information to the airplane was because the airplane's altimeter, through the air data computer, would send the indicated
altitude that the airplane was experiencing down to the radar unit, and of course it was incorrect, and they would read it off their readout down in the air traffic control center and transmit it back to the pilots, and of course it was incorrect because they were getting incorrect information to begin with. क्योंकि वो कहाँ से आई थी? प्लेन के जो इरेटिक कंप्यूटर से जो कंप्यूटर गलती रीडिंग दे रहे थे, उन रीडिंग के मुताबिक कैलकुलेशंस की गई थी और वो गलत थी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट्स को ये जानकारी नहीं थी तब। इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में पता लगा था कि एयरपेरू की फ्लाइट PL603 इट वाज ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड्स, जबकि उनका एल्टीमीटर दिखा रहा था कि वो तकरीबन 10,000 फीट के आसपास उड़ रहे हैं। पैसेंजर्स को बिल्कुल भी भनक नहीं थी इस ड्रामे की जो कि कॉकपिट में हो रहा था उस समय। कैप्टन श्राइवर ने अब फर्नांडिस को हिदायत दी कि वो फ्लाइट मैनुअल्स में चेक करें कि जो उनको इतनी एरेटिक एबनॉर्मल रीडिंग्स वार्निंग्स आ रही हैं उसका क्या कारण हो सकता है। दूसरी तरफ लीमा में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने he continued to guide the Aeroperu flight PL603 towards a landing at the airport. Avoid large or abrupt radar inputs. If normal left hydraulic system pressure available, now Captain Schreiber ordered Fernandez to scan the flight manual for some explanation of the warnings. Left hydraulic system available. Yes, crosswind. Do not attempt an auto land. और चूंकि प्लेन के कंप्यूटर इनकरेक्ट रीडिंग ट्रांसमिट कर रहे थे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, तो किसी को भी ये नहीं पता लगा कि उस समय द फ्लाइट PL603 was descending. Aeroperu 603, we are observing you now at level 9,200. What is your heading now? We're heading level 205. Affirmative. You are turning slowly to the right, correct? No, we are maintaining course to stay away from the coast. The computers at the Boeing 757 continued to give critical information which the pilots were instructed to obey. Let's try to make a descent on this heading. It's climbing. But now they could not trust. Your distance is 30 miles. Do you want a heading to proceed to the localizer, correct? Correct. We're going to suggest course north 360. 360. We have problems here reading the instruments. You're going to have to help me with altitudes and airspeeds. If it is possible. Okay, received. Let's go. The approach is set. उसके बाद दोस्तों स्पीड जो थी स्टॉल स्पीड से भी कम नीचे चली गई काफी, और उसके बाद फिर अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ी। Let's go down to 10,000 feet. Why does the speed go away so fast? Could it be the real speed? That's what worries me. No, I don't think so. Can you verify our speed, please? 320 is indicated. We have 350, but the engines are on idle, but we keep accelerating and accelerating. Okay, received. अब जो है सिचुएशन बहुत टफ होती जा रही है। You can imagine the pilots, they're flying there, they don't have a true indication of the speed. They're obviously trying to fly the airplane and changing the attitude up and down. That in itself will change an indication of airspeed, although it was incorrect. Both pilots were really confused. They didn't know what to do. They didn't know how to act. And they did unhuman efforts to save the aircraft. But, I mean, they were really tired and of all the work and all the confusion and all the alarms. फर्नांडिस ने सुझाव दिया कि वो स्पीड ब्रेक्स को एम्प्लॉय करते हैं। Extend the speed brakes. और स्पीड ब्रेक्स वो होते हैं दोस्तों जो प्लेन की स्पीड एकदम ड्रास्टिकली कम कर देते हैं, और डिप्लॉय करने के थोड़ी टाइम बाद तो बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद
फिर से एक और वार्निंग मिलनी शुरू हो गई। All three indicators are fine on speed, fine on overspeed. और उनको इंडिकेशन मिल रहा था ओवर स्पीड का। ओवर स्पीड का मतलब होता है कि प्लेन जो है जरूरत से ज्यादा तेजी से चल रहा था, लेकिन पायलट्स को ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन अगर ये इंडिकेशन सही हो तो क्या हो? अगर ये इंडिकेशन सही है तो बोइंग 757 क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो अब पायलट्स के सामने एक और डिसीजन लेना था उनको कि क्या करें वो इस सिचुएशन में, प्लेन को और तेज करें या प्लेन को की स्पीड कम करें। टेक ऑफ के बाद 15 मिनट हो चुके थे और जो है उनको अजीब और गरीब अलग अलग वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे एयरपेरू की फ्लाइट PL603 के कंप्यूटर से। Rudder ratio. Can't be. Nothing's disconnecting. All engine instruments are okay. What can our real speed be? The speed indication. उनके बचाव का सिर्फ एक ही सोर्स था, वो था लीमा का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। We are observing you crossing the 260 of Lima at 31 miles west. Level is 10,700. Velocity is approximately 280 over the ground. Perfect. लेकिन वो भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा। मदद तो वो कर रहे थे लेकिन वो सही मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर से बहुत ही अलग थलग गलत सलत इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही थी टावर को, और टावर उसी के ऊपर कैलकुलेट करके उनको रीडिंग और उनकी मदद कर रहा था। Over speed. और उसके बाद दोस्तों दोनों वार्निंग एक साथ मिली। ओवर स्पीड वार्निंग भी मिली और स्टॉल स्पीड वार्निंग भी मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्लेन एक समय में स्पीड तेजी से भी चल रहा हो, और स्टॉल वार्निंग का मतलब होता है कि प्लेन आसमान से गिर रहा है क्योंकि स्पीड इतनी कम हो चुकी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि दोनों एक साथ चीजें एक साथ हो कर रहा हो प्लेन, लेकिन उनको ऐसी ऐसी वार्निंग मिल रही थी पायलट्स को कॉकपिट में। Let's descend. Can't be over speed. We're still flying. They get a stall warning that the airplane is falling out of the sky. At the same time, they got overspeed warning. Impossible to have two contradictory alarms. Either you're stalling or either you're having an overspeed. So that created more confusion. Really, this problem has never happened before. It was a new emergency. In aviation, you always figure, what's going to kill me? What is the critical thing? Let's take care of that first, and then we'll take care of the other lesser issues later on. When you get stall warning or when you get an overspeed indication, you need to pay attention to those immediately. In this case, they were getting both a stall warning and an overspeed. Well, which is right? फर्स्ट ऑफिसर फर्नांडिस ने टावर से मदद मांगी कि अब वो इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कर पाएंगे तो कोई और प्लेन जो है एयरपोर्ट में वो आके उनकी मदद कर पाए या किसी तरह वो जमीन पे उतर पाए। We request, is there any plane that can take off and rescue us? Acknowledged. Rescue has been alerted. Any plane in the area to guide us? An Aeroperu that may be in the area. Anybody? Oh, don't say anything like that. Yes, because right now we are in a stall. उनको ऐसे ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे थे कि प्लेन बहुत ही धीरे चल रहा है और वो आसमान में से गिर जाएगा किसी भी क्षण। Aeroperu 603. We have a 707 that is leaving for Putuel. We will advise him. We are not in a stall. It's a false alarm. कैप्टन श्राइवर का जो मीटर इंडिकेटर था वो स्पीड बता रहा था 350 नॉट्स, which is well above the stalling speed limit, लेकिन उनको स्टॉल स्पीड के इंडिकेशन आते जा रहे थे कंटिन्यूअसली।
No, we have stick shaker. It has to be. But even with speed brakes and everything, we're maintaining 9,500 feet. Why aren't we getting the same reading? When the airplane is slowed up to a point in the air that it can no longer sustain itself in flight, it stalls. The wing stalls or stops flying. There's a warning system built into the airplane that tells the pilots when that's happening. It's known as a stick shaker, along with a voice warning, which we just heard. When the stick shaker goes off because the airplane is slowed down too much, you get a warning like this, where the control column is shaking and vibrating, along with the voice warning saying that the airplane is stalling, and of course the pilots would go into the aircraft stall recovery procedure at that point. इंसान और मशीन की इस लड़ाई में दोस्तों मशीन जीत रही थी। पायलट्स को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ हैं और कितनी ऊंचाई से पे उड़ रहे हैं। असल में दोस्तों वो जो थे वो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहे थे और प्लेन अब सिर्फ 1000 फीट ऊंचा था पैसिफिक ओशन। लीमा के एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कि गलत कैलकुलेट कर रहे थे क्योंकि उनको प्लेन के ट्रांसपोंडर से गलत रीडिंग मिल रही थी, वो बार बार आश्वासन दे रहे थे पायलट को कि वो सब कुछ ठीक है और तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे थे। लेकिन जबकि दोस्तों असल में मैंने आपको थोड़ी सेकंड पहले ही बताया कि प्लेन तकरीबन 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। Aeroperu 603, you are now flying on course 120. We observe you to be at level 10,000. Your speed is approximately 220 and a distance from Lima of 33 miles to the northwest. The 707 will be ready in 15 minutes to fly west to help you. Pilots then aborted their plan of making a landing. और उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही था कि लीमा एयरपोर्ट से एक और प्लेन उड़े और वो इनको गाइड करके वापस लीमा एयरपोर्ट की तरफ ले जाए। To have another aircraft come alongside and formate, or you formate on it, would have been one way of recovering from this abnormal situation. However, we must remember that the flight was at night and darkness. The pilots may or may not have had any formation flying training, but that would have been one way to resolve the problem quite well, actually. What's happening? अब दोस्तों पायलट को सबसे खतरनाक वार्निंग इंडिकेशन मिली और वो थी ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी अलार्म से, जो कि बताता है कि आप जमीन से टकराने वाले हैं किसी भी क्षण। Course of 300. We have the terrain alarm and we're supposed to be at 10,000 feet. According to the monitor, you have 105. Too low, terrain. Too low, terrain. There is no checklist for if you have these 7 or 8 warnings going off, which they did, and they couldn't shut them off. It's a very rattling experience. I could play that tape for you, and you hear those things: whoop whoop, pull up, terrain, terrain, and all of these things going off, and the stick shaker. Brrr. It's a very unnerving environment. All the computers are going crazy here. लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनको बार बार आश्वासन दिए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक है और वो तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे थे। There's a system on board the aircraft called the ground proximity warning system, and it senses a rate of descent in the airplane. The irony of the situation was they were getting warnings from that saying too low, terrain, terrain, too low. That probably, in all probability, was a true warning. But because they'd been subjected to so many warnings and ongoing false warnings, horns, bells, and whistles, that they didn't really, I don't think, react to that too seriously. ड्राइवर ने अपना प्लेन समुद्र की तरफ टर्न किया क्योंकि इधर तो हो सकता है कि शायद वो किसी पहाड़ या स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग से टकरा जाए। जितने भी वार्निंग्स उन्हें मिल रहे थे दोस्तों, उसमें से जो टेरेन अलार्म था जो कि बता रहा था ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी अलार्म जो था वो करेक्ट था उस दिन।
Aeroperu 603. We observe you indicating the left turn to the west. I don't understand you. We observe you turning to the left, circling to the west. Affirmative. We are heading 250, but we are going out towards sea because of the low terrain alarm. लीमा में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने नोट किया कि जो प्लेन का जो कोर्स है वो बदल गया है और बाद में उन्होंने कंफर्म भी किया ये बात कि जो प्लेन है वो समुद्र की तरफ मुड़ गया है. Yes, affirmative. We observe you 42 miles, flying to the west, course 250. We are over water, aren't we? Affirmative. Over the water. You are 42 miles to the west. अब समुद्र के ऊपर अंधेरे में ऑन इन हेज पायलट्स के सामने एक और नई प्रॉब्लम थी, वो थी उनकी स्पीड. Are we going down now? We have 370 knots. Are we descending now? We are showing the same speed. You have 200 knots Speed approximately. Speed 200 knots. 220 ground speed, reducing speed slightly. अब उनकी स्पीड इंडिकेटर जो रीडिंग दे रहा था वो था 200 नॉट्स और पायलट्स बहुत ही चौंकने हैरान हो गए थे क्योंकि 200 नॉट्स जो है स्टॉल स्पीड के बिल्कुल करीब है. Damn, we're gonna stall right now. Let's go up. Let's see. Let's go up here. और अब वो परेशानी में भी थे कि उनको एक ही साथ सब वार्निंग मिल रहे थे, स्टॉल स्पीड का भी, ओवर स्पीड का भी और टेरेन वार्निंग भी उनको मिल रही थी. उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है इस वक्त. ड्राइवर ने इस वक्त एक दूसरा कोशिश करी लैंडिंग करने की और उन्होंने ILS सिस्टम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उसकी फिर से मदद लेने का सोचा. I want to try to intercept the ILS. I'm trying to descend. Lima, Aeroperu 603. We will try to intercept the ILS. Let us know if we are in. Received, Aeroperu 603. You show now level 9700. अब जो है थोड़े समय के लिए इंस्ट्रूमेंट्स ठीक तरह से काम करने लगे और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी उनकी आशा बंधाई कि एक और प्लेन सिर्फ टैक्सी के लिए तैयार है एयरपोर्ट से. This one's right. This one's okay too. जो स्पीड इंडिकेटर था वो तो दोस्तों अब थोड़े टाइम से सही तरीके से काम कर रहा था. Stand by to verify speed. The 707 is about to take off. It is on taxi. Confirm our speed. It is very important we do not have any speed indications on board. Understood. You're starting to turn and we observe your Ground speed at 270. Stay there, Eric. 270 is okay. लेकिन एल्टीट्यूड जो था अभी भी रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा था, रॉन्ग रीडिंग दे रहा था ऑल्टीमीटर रिगार्डिंग द एल्टीट्यूड ऑफ द फ्लाइट. altitude is 9,700. Your speed is 240 knots. Ground speed on the monitor. How can we be flying at this speed if we're descending with engines on idle? Give me the altitude, please. Yes, you are maintaining 9,700 according to the scope, sir. 9,700? Yes, correct. What is your indicated altitude? Do you have any visual reference? 9,700! But it is indicating too low terrain. Are you sure you have us on the radar at 50 miles? Hey, look! With 370, we have 370 what? Do we lower gear? Aeroperu 603, Lima. What do we do with the gear? सच्चाई का पता लगा उन्हें सिर्फ आखिरी क्षण में. We're hitting water! Pull it up! Climb Aeroperu 603. If you need to, pull up. तकरीबन 20 सेकंड के लिए पायलट स्ट्रगल टू गेन द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन. उसके बाद सब एकदम शांत हो गया. I've got it! I've got it! We're gonna turn over!
Aeroperu 603, Lima. Aeroperu 603, Lima. अगले दिन मैक्सिकन बिजनेसमैन मोनस एल्बर्ट को पता लगा कि एक एरोपेरू की फ्लाइट क्षतिग्रस्त हो गई है। 5 minutes after takeoff, the crew informed the tower that they were having an emergency and they requested clearance to return to Lima. During the process, contact with the aircraft was lost at 0110, with the latest position of the aircraft being 50 miles north of the city of Lima. About 6 o'clock in the morning, I got up and turned on the news channel, and I heard there was a crash, an airplane crash of Aeroperu, but the news mentioned New York to Lima. Rescue operations are underway by authorities. The aircraft was carrying 61 passengers and 9 crew members. कीटो फर्नांडिस को अभी हाल ही में पेरू का एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया गया था और ये जो त्रासदी थी ये उनकी पहला केस था। So I went to the shower and didn't pay a lot of attention. But when I came out, they corrected the news and they said from Lima to Santiago. And I knew in that plane Kenny and Abraham were flying. The news was very vague, so they mentioned there might be some survivors, and they mentioned that the plane crashed on the Pacific Ocean, and they didn't have a lot of news, and the crash was at night. So in my mind, I thought that the plane sort of landed on water, and most people got out. जो को-पायलट थे डेविड फर्नांडिस वो कीटो के नेफ्यू थे। I was in bed. It was about 4:30 in the morning, and they called me. Your nephew is lost in an airplane. They asked me, how do you feel that your nephew was a co-pilot? My gosh, I feel very bad, but I'm a professional. I have to do a job. I have to comply and complete my duty. So that's what I did. फर्नांडिस जो है नेवी हेलीकॉप्टर में उस दुर्घटना की प्लेस पे पहुंचे और देखने से ही उन्हें पता लग गया कि there were no survivors. कोई भी नहीं बचा था उस एक्सीडेंट में। 9 शव जो थे वो पानी के ऊपर बह रहे थे और बाकी जो है प्लेन के साथ ही समुद्र तल में समा गए थे। फर्नांडिस लीमा के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी मिले, लेकिन his account was totally baffling. Well, the controller really didn't know. He was just trying to help. So he did all he could to help him. But unfortunately for him, it was a new emergency too. उन्होंने अपने नेफ्यू की मौत को अपने दिमाग से बाहर निकाला और उन्होंने ये ठाना कि पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उन्हें जरूरत थी प्लेन के फ्लाइट रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर, जिससे कि पता लग पाता कि क्या हुआ उस रात उस प्लेन के साथ, और उनको चाहिए थी मदद। They had found the aircraft. It was pretty well documented by radar. The Navy, the Peruvian Navy, had gotten a fix on the flotsam and the wreckage in the ocean. And the only thing left to do was find it on the bottom of the ocean, which they did not have the facilities for. फर्नांडिस ने कांटेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ्टी बोर्ड को, NTSB को, और रोड्रिगेज जो है लीमा पहुंचे फर्नांडिस की मदद करने के लिए इस केस में।
I found out that his nephew was the first officer. I suggested that perhaps they should consider removing Captain Fernandez from the investigation because of emotional involvement and what have you. यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने प्रोवाइड किए अंडर वाटर रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स प्लेन के ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढने के लिए। जो प्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है वो तकरीबन 30 दिन तक लोकेटर बीकन सिग्नल देता रहता है और उसके बाद उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तो इसको ढूंढने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने प्रोवाइड किए थे वो अंडर वाटर RCVs। और मलबे को देखने के बाद ये पता लगा कि प्लेन जब पानी में गिरा था तो वो एक ही टुकड़े में था। I've done in-flight breakups that were spread over 16 miles and maybe a mile and a half wide, which tells you instantly that just what you know of looking at the wreckage, that this thing didn't hit in one piece. It clearly was disintegrating as it was crashing. But in this case, it was a fairly tight debris field, and so obviously it hit at high speed and was fairly closely knit wreckage pattern. बोइंग 757 से वो ब्लैक बॉक्स रिट्रीव हुए, उनको सरफेस पे लाया गया और उसके बाद उन्हें कूलर्स में रखा गया जिसमें कि फ्रेश वाटर था टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग। उसके बाद वो ब्लैक बॉक्सेस भेजे गए वॉशिंगटन DC जिससे कि NTSB उनका एनालिसिस कर सके। जो कॉकपिट रिकॉर्डर था उससे इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ सबूत मिल सकता था। जो भी फर्नांडिस और श्राइवर ने बोला था और जो भी उनको वार्निंग सिग्नल्स मिले थे वो सब वहाँ रिकॉर्ड हुआ था। कहीं कहीं रिकॉर्डिंग में आवाजें बहुत हल्की थी और मुश्किल से पता लग पा रहा था, लेकिन जो कियोस था कॉकपिट में उस दौरान वो बिल्कुल साफ पता लग रहा था रिकॉर्डिंग में। The tape was digitized into a computer, filtered and then enhanced. ¿Cómo puede estar volando con esta velocidad si estamos bajando con todo el poder cortado? जो क्लू इन्वेस्टिगेटर्स को चाहिए था वो अब उनके पास था। It was clear to us that they were really experiencing a problem with airspeed and altitude, and the airspeed and altitude indications in the aircraft are strictly a function of what we call the pitot-static system. एक पिटोस्टैटिक सिस्टम जो प्लेन में होता है वो दोस्तों हर एक प्लेन में पाया जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं जो कि बाहर के एयर प्रेशर को मेजर करते हैं जिससे कि प्लेन का ऑल्टीट्यूड और स्पीड की जानकारी मिल सके। और अगर ये एक्सटर्नल पोर्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं किसी कारणवश तो प्लेन के जो कंप्यूटर हैं वो गलत इंफॉर्मेशन बताते हैं regarding these two parameters. But why would these ports would be blocked in the first place? अब इन्वेस्टिगेटर्स ने ये खोजबीन शुरू करी और जो बात उनके सामने आई उन्होंने उनको एकदम स्टन कर दिया। कैप्टन श्राइवर के जो स्टैटिक पोर्ट थे वो एकदम कंप्लीटली ब्लॉक थे, उस पे टेप लगा हुआ था। और अब इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगा कि क्या हुआ।
लीमा एयरपोर्ट में टेक ऑफ करने से पहले मेंटेनेंस क्रू ने प्लेन की सफाई की थी और उन्होंने स्टैटिक पोर्ट को टेप से कवर किया था। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि करा जाता है जिससे कि उस पोर्ट का बचाव हो सके, लेकिन वो मेंटेनेंस क्रूमैन उसको उतारना भूल गया था। एक बहुत ही छोटी सी गलती, लेकिन एक बहुत ही कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट। The taping was never removed, and when the airplane departed and started to fly, nothing but trapped static sea level air pressure was sensed by those instruments. And as a matter of fact, the airplane was climbing up in thinner air, and the information presented on the instruments and to the air data computer was false, which generated just totally non-normal readings. The inspector who was supposed to quality check his work did not do it, and the supervisor out on the line that night was not there. He was sick, and there was a regular mechanic who was filling that role. He did not see it, and the captain or the pilot, in this case the captain, did the pre-flight. They do a walk around looking for just that kind of thing. The captain did the pre-flight that night, and he did not detect it either. A little piece of paper with glue caused an accident. But the paper and the glue are not to blame. Humans are to blame, because humans use that tape in the wrong place for the wrong purpose. एरोपेरू की फ्लाइट PL603 से पहले एक ऐसा ही मिलता जुलता एक्सीडेंट हो चुका था। फरवरी 1996 में तकरीबन 189 पीपल डाइड, जबकि एक जर्मन चार्टर बैरन एयर crashed 5 miles after taking off in Dominican Republic. और NTSB की टीम ने उस इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट किया था और फाइंडिंग में पता लगा था कि एक पिटो ट्यूब जो कि पिटोस्टैटिक सिस्टम की एक इंटीग्रल पार्ट है वो ब्लॉक थी। और जैसा कि एरोपेरू के केस में हुआ था, बर्गन एयर के क्रैश में भी उस समय नाइट थी, रात का टाइम था और उनके पायलट ने प्लेन को ऊपर नीचे किया हवा में, लेकिन बाद में वो भी समुद्र में प्लेन क्रैश कर बैठे। The Bergen accident clearly pointed out already that a crew will get confused by these cryptic advisories, rudder ratio, mark airspeed trim, and not getting a clear indication what the underlying problem is, which is a problem with the air data computer or anything which comes behind it, the pitot tube or the static port. These were facts which were well known to the manufacturer, and so it happened again. बर्गन एयर क्रैश के 3 महीने के बाद बुलेटिन्स जो थी इशू की गई थी सारे एयरलाइन कैरियर्स को रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी पिटोस्टैटिक ट्यूब्स एंड पिटो ट्यूब्स, लेकिन एरोपेरू ने अभी ये इम्प्लीमेंट ही नहीं करी थी हिदायतें। The bulletins and the, let's call it the fruits of the Dominican Republic investigation of Bergen Air had not yet reached Aeroperu at the time this accident occurred. The Peruvian government very correctly made a point of that in their report on the accident, saying that they should have given more impetus to those recommendations to get them out to the industry quicker. Well, it's very unfortunate, but it comes back to the fact that communication in aviation is sometimes deficient. There is not that high level of exchange of information between different operators, as they are all competitors. They do not exchange certain information, and specifically not the one which is safety related. And that's definitely the case in the Aeroperu accident. 9,700, but it is indicating too low terrain. अगर
श्राइवर और फर्नांडिस को बर्गर एयर इंसिडेंट के बारे में पता भी होता है तो भी हो सकता है कि वो ये ट्रेजेडी सरवाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर इतना जबरदस्त प्रेशर था उस समय। It's easy to sit here in the 757 cockpit and play the Monday morning quarterback, having heard the bells and the overspeed warnings, the ground proximity warning, the stall warning. It's very easy to do that and sit here and say what I would have done being an experienced pilot. But to put yourself into the position of those two pilots that night, they were in an extremely difficult situation to fly that airplane and recover from that experience. क्रैश के 2 हफ्ते बाद मोनस एल्बर्ट भी उन शोकग्रस्त लोगों के साथ थे जो कि आए थे अपने लव्ड वंस की रिमेन्स कलेक्ट करने और उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ और खास दोस्त को एक लीमा मॉर्ग में पहचाना। I wanted to find them. I really wanted to find them. And one part of me didn't want to find them because there was this fantasy that if I don't find them, maybe they're in an island with a drink and looking at some girls dancing. I can close the chapter. I can go and take them and have them buried, and there'll be a place for the family to go and put some flowers once in a while and say, okay, my brother-in-law's here, or my dad is here, or my husband is here. अब जबकि इन्वेस्टिगेटर्स को पता लग गया था कि क्या कारण था उस एक्सीडेंट का, उसके बाद जो था दोस्तों कोर्ट केस शुरू है। नवंबर 1996 में एक मियामी लॉयर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे 41 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स, उन्होंने केस दायर किया जिसके मुताबिक कि उन्होंने कहा कि बोइंग जो मैन्युफैक्चरर थे इस प्लेन के, वो इस एक्सीडेंट के रिस्पॉन्सिबल है। Boeing has to foresee the misuse of their product. In other words, the manufacturer of a product is legally liable for the foreseeable misuse of their product if it can be corrected. In other words, Boeing builds the airplane with a potential hazard in it. That hazard is that in order to clean the airplane, you have to cover the static port. And if you don't take it off, the airplane can crash. I wanted them back. And since I couldn't get them back, at least I wanted the wives of the victims to get compensated. How much is that worth? I don't know. I didn't know. Abraham had 3 daughters, and now they don't have a father. So what is the compensation? The best compensation, if can be done, is get them back. Give them life back again. But because that is not possible, then the other possibility is to get a monetary compensation. And then you fight for the best compensation you can get. लेकिन बोइंग ने गलती निकाली एरोपेरू की। उनके मुताबिक उनका मेंटेनेंस स्टाफ ने टेप लगाया था उन पोर्ट्स के ऊपर जहां पे कि क्लियरली वार्निंग सिग्नल्स दिए हुए थे, और बोइंग ने कैप्टन एरिक श्राइवर की भी गलती निकाली कि उनको टेक ऑफ करने से पहले पूरा विजुअली मॉनिटर मुआयना करना चाहिए था अपने एयरक्राफ्ट का। लेकिन इन्वेस्टिगेटर रिचर्ड रॉड्रिगेज ये समझ सकते हैं कि कैप्टन श्राइवर ने कैसे मिस आउट कर दिया होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बहुत ऊंचाई पे है, तकरीबन 15-17 फीट की ऊंचाई पे है, और डक्ट टेप यूज किया गया था इस पोर्ट को कवर करने के लिए। One of the reasons is it's very high. It's about maybe 15-17 feet up in the air, and at night with the flashlight, and this happened to be duct tape, which you're not supposed to use. They specify the tape, and it was duct tape, which is silver, so it would not distinguish itself against the background of the fuselage of the aircraft. So basically 3 or 4 people failed to detect the tape on the aircraft prior to departure. जब तक दोस्तों खोज चल रही थी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं,
जिस मेंटेनेंस क्रू ने वो टेप लगाया था उसको जेल भेज दिया गया दोस्तों। Lawyers, you know, sometimes they confuse matters, and they send a guy and ask people questions and ask questions, and the one that stuck the tape was the painter, was the lowest cultured and the one that knew less about what could happen. And the judge resolved that he was the one responsible, and he was in jail. So that you don't lose the airplane because a maintenance man making $2 an hour down in Peru makes a mistake. It's foreseeable that that kind of a person is going to make a mistake. That's human nature, they're going to make a mistake. And you build your system so you don't lose your $50 million airplane because a maintenance guy makes a simple mistake. जो तजुर्बेकार पायलट हैं एनएल मैकडॉल्स, वो कहते हैं कि दोनों पायलट्स को अपने प्लेन को लैंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी उस रात। अगर वो होते तो वो हवा में ही जितनी देर प्लेन को उड़ा सकते थे उड़ाते। Experience has shown that if you don't fly the airplane when you're experiencing an abnormal situation, and they certainly were, you must fly the airplane. Just concentrate on flying the airplane and get the airplane under control, first and foremost. Are we going down now? We have 370 knots. If you don't do that, the airplane's going to bite you, and you're going to end up in more serious situations. So I would fly the airplane, make sure I was able to fly it safely, if only by using the attitude direction indicator and normal power settings that I was familiar with, and then eventually work my way back and get it on the ground. प्लेन को थोड़ा एंगल ऊपर की तरफ रखते और स्पीड जस्ट अबव दी क्रूज स्पीड रखते और जितनी देर तक वो हवा में रखते वो प्लेन को। It always becomes a problem when pilots are reduced to be push-buttonists. The man-machine interface has to work, and has to work as humans are to operate these airplanes. They have to be designed appropriately for the use of a human being. Of course, you can put in all digits and numbers and computer gimmicks, and you can, but still, it's man who has to operate and survey it. And I believe a human being should be in charge. 1999 में Boeing और Aeroperu went for an out-of-court settlement with the victim survivors, और हर एक विक्टिम की फैमिली को तकरीबन $1 मिलियन का कंपनसेशन मिला। और ये इसलिए भी बहुत हाई था क्योंकि जिस तरीके से पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हुई थी, बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना थी। We were able to show that a lot of the people were alive. In a crash like this, a lot of the people would survive the crash and then died of drowning. There was no question in our minds that the people suffered terrible, terrible terror and pain when this happened to them. They were horrified. They were awake. They knew what happened. इस दुर्घटना के बाद एरोपेरू 1999 में बैंकरप्ट हो गई। बोइंग ने अपनी ट्रेनिंग इंक्रीज करी रिगार्डिंग द पिटोस्टैटिक सिस्टम और नए रेगुलेशंस जारी किए। The designers of these products and the manufacturers of the products know that they have to take safety into account. They have to, of course, they do that because they know it's the right thing to do. But they also know that if they don't do it, there's going to be somebody watching them that's going to investigate it, that's going to find out why it happened, and that they're going to be accountable for what they do wrong. And that if they don't take into consideration safety, they're going to have to pay for it. Well, the accidents made the aviation industry aware that something simple like a pitot tube or a static port can cause a major incident or even an accident. And even airline pilots were reminded that this is a vital basic thing and it may happen, and this is the way how to prevent it to turn into a catastrophe. The case was settled
The industry repented and then moved on. Such is the way of the world of international commercial airline industry. लेकिन जो त्रासदी हुई, जो लोग मारे गए, उनके परिवारजन के लिए ये घटना एकदम मरते मरते तक दम तक उनको याद रहेगी। और इस घटना ने प्रूव भी किया कि एक छोटी सी डक्ट टेप जो है एक इतने बड़े एयरलाइन को क्षतिग्रस्त करने में काबिल है। Suddenly you say that guy doesn't exist anymore. It's very hard to swallow that. It's very hard to understand, and it took me a long time to accept it. So the memory is still there, and it will be there for a long time. I'm not going to let go. I don't want to let go. So दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है आज का शो, जिसका था नाम दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स, आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। और आज की घटना थी 1996 में घटित एक दुर्घटना, एरोपेरू की फ्लाइट PL603 की। तो दीजिए इजाजत मेरे को, यानी कि आपके दोस्त, आपके होस्ट भांबरी को समाप्त करने की आज का शो। मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते इसी दिन, इसी समय, इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।